Hello friends, in last lecture we have seen the derivatives of composite functions. In this lecture we will see the derivatives of product and quotient. First one, derivatives of product. It means if y is equal to u into v, then the value of dy by dx is given by u into dv by dx plus v into du by dx. This is the formula of derivative of u into v. मित्रांनो, जर दोन टर्मच्या मध्ये मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह असेल तर डेरिव्हेटिव्ह काढत असताना यानुसार काढायचं. पहिलं टर्म इंटू दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह प्लस दूसरा टर्म इंटू पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह. अगर दो टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन रहता है, गुणाकार साइन रहता है, तो डेरिवेटिव निकालते समय पहला टर्म इंटू दूसरे टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म इंटू पहले टर्म का डेरिवेटिव, ऐसा डेरिवेटिव निकालते हैं. इन जनरल वी कैन से दैट इट इज u इंटू वी डैश प्लस v इंटू u डैश. If y is equal to first term into second term, then its derivative y dash is given by पहला टर्म इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म इंटू पहले का डेरिवेटिव. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट. यावरती डिपेंड असणारे एक्झाम्पल्स पाहूया. फर्स्ट वन, इफ y इज इक्वल टू e raised to x into sin x, then dy by dx is equal to y is equal to e raised to x into sin x. So this is first term and this is second term. Okay, so the value of dy by dx is given by in this way: first term into derivative of second term plus second term into derivative of first term. फर्स्ट टर्म बोले तो e raised to x into दूसरे का डेरिवेटिव मतलब sin x चं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x प्लस सेकंड टर्म बोले तो sin x इंटू पहिल्या टर्मचं डेरिवेटिव मतलब e raised to x का डेरिवेटिव, इट इज e raised to x. So friends, we can take e raised to x common from these two terms. It is equal to e raised to x inside the bracket, the remaining term is cos x plus sin x. So this is your answer, e raised to x into bracket cos x plus sin x. It is in option C. The option C is correct. Number 46, if y is equal to e raised to x into cos x, then dy by dx is equal to, look here, y is equal to e raised to x into cos x. Well, so this is u and this is v. So let us apply the formula of u into v. dy by dx is equal to, what is the rule? U into derivative of v plus v into derivative of u. So it is first term e raised to x into derivative of second term cos x का डेरिवेटिव बोलिए, it is minus sin x. Okay, u into v dash plus v मतलब cos x into u dash बोले तो पहिल्याचं डेरिवेटिव e raised to x चं डेरिवेटिव e raised to x. Now once again we take e raised to x common from these two. It gives you e raised to x inside the bracket cos x minus sin x or minus sin x plus cos x. It is minus sin x plus cos x. So this is your answer, e raised to x into bracket minus sin x plus cos x. E raised to x into bracket minus sin x plus cos x. It is in option B, e raised to x into bracket minus sin x plus cos x. So option B is correct. Let us move to the next question. If y is equal to x into e raised to x, let us find directly the answer here. dy by dx is equal to first term x into derivative of second term e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x प्लस सेकंड टर्म मतलब e raised to x into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x चं डेरिवेटिव 1. मित्रांनो, पहिलं टर्म आहे तसं इंटू दुसऱ्या टर्मचं डेरिवेटिव प्लस दुसरं टर्म आहे तसं इंटू पहिल्या टर्मचं डेरिवेटिव, यानुसार उत्तर लिहायचं असतं. सो इट इज इक्वल टू, इफ वी टेक e raised to x कॉमन, देन इनसाइड द ब्रॅकेट x plus 1 is remaining term. So e raised to x into bracket x plus 1 be the answer. So in options there is x into e raised to x plus e raised to x is there. So option A is correct. Now the next question, if y is equal to x into log x, then dy by dx is equal to, y is equal to x into log x, then dy by dx is equal to first term
x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकेंड टर्म मतलब log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x का डेरिवेटिव इट इज 1. Okay, so x get cancel. Final answer will be 1 plus log x into 1 matlab log x. So 1 plus log x be the answer. It is in option D. So option D is correct. Next one, if y is equal to x square into e raised to x, then dy by dx is equal to dy by dx is equal to first term मतलब x square into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x प्लस सेकंड टर्म बोले तो e रेस टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x स्क्वेअरचा डेरिवेटिव किती असतं 2x. वेल, so we take e raised to x common from these two. We get e raised to x inside the bracket x square plus 2x. Getting clear? So this is the answer. E raised to x into bracket x square plus 2x. It is in option B. So option B is correct. Next one, if y is equal to x into sin x, then dy by dx is equal to dy by dx is equal to u into v first term x into derivative of second term sin x चं derivative असतं cos x plus second term means sin x into derivative of first term derivative of x is 1. So this is your answer. X into cos x plus sin x. X into cos x plus sin x. It is in option A. So option A is correct. Next one, parallel question है. If y is equal to x into cos x, then dy by dx is equal to dy by dx is equal to first term मतलब x into second का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x. ओके, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म मतलब cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x चा डेरिवेटिव 1 असतं. So this is the answer. Minus x into sin x plus cos x. Look here, minus x into sin x plus cos x. It is in option B. So option B is correct. Next one, if y is equal to x into tan x, then dy by dx is equal to again u into v. dy by dx is equal to y is equal to x into tan x. फर्स्ट टर्म मतलब x इंटू सेकंड टर्म का डेरिवेटिव tan x चं डेरिवेटिव असतं sec square x प्लस सेकंड टर्म मतलब tan x इंटू फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1. So this is your answer. x into sec square x plus tan x. It is in option B. So option B is correct. Number 53. If y is equal to x into e raised to minus x, then dy by dx is equal to, we find dy by dx directly. It is equal to u मतलब x into डेरिवेटिव ऑफ v मतलब दुसऱ्याचं डेरिवेटिव e रेस्ट टू मायनस एक्स का डेरिवेटिव है e रेस्ट टू मायनस एक्स इंटू -1. वी नो दॅट e रेस्ट टू के एक्स चं डेरिवेटिव जे असतं ना ते e रेस्ट टू के एक्स इंटू के असतं. सो e रेस्ट टू मायनस एक्स का डेरिवेटिव हुआ e रेस्ट टू मायनस एक्स इंटू -1. सो दिस इज फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस second term e raised to minus x into derivative of first term x derivative 1. Now we take e raised to minus x common here. E raised to minus x common, then inside the bracket negative x plus 1 is remaining, minus x plus 1 हे शिल्लक राहतं. So this is your answer. E raised to minus x into bracket minus x plus 1. Look here, e raised to minus x into bracket minus x plus 1. So option C is correct. Question number 54. If y is equal to x into sin 3x, then dy by dx is equal to dy by dx is equal to first term x into derivative of second sin 3x का डेरिवेटिव it is cos 3x into 3. sin kx डेरिवेटिव मित्रांनो cos kx into k असतं. So derivative of sin 3x is cos 3x into 3. Okay, प्लस सेकंड टर्म बोले तो sin 3x into पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1. So this is your answer. 3x cos 3x plus sin 3x. 3x cos 3x plus sin 3x. It is in option A. So option A is correct. Now the parallel question. If y is equal to x into cos 2x, then dy by dx is equal to dy by dx is equal to u मतलब x into derivative of v cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x
कॉस के एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन के एक्स इंटू के, तो कॉस 2x का डेरिवेटिव कितना हुआ, माइनस साइन 2x इंटू 2. वेल फर्दर दिस इज फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म म्हणजे कॉस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म एक्सचं डेरिवेटिव 1 येतं. सो दिस इज युअर आन्सर. इट इज मायनस 2x इंटू साइन 2x प्लस cos 2x. So this is your answer, minus 2x sin 2x plus cos 2x. It is in option B. So option B is correct. Next sum, if y is equal to e raised to x into tan x, then dy by dx is equal to let us solve this one. First term म्हणजे e raised to x into दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह tan x चं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं, sec square x प्लस दुसरं टर्म म्हणजे tan x इंटू पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह e raised to x चं डेरिव्हेटिव्ह e raised to x असतं. पहिलं इंटू दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरं इंटू पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह असं उत्तर लिहायचं असतं. सो वी टेक e raised to x कॉमन फ्रॉम दिस टू, e raised to x कॉमन, देन इनसाइड द ब्रॅकेट sec square x plus tan x is remaining. So this is your answer, e raised to x into bracket sec square x plus tan x. It is in option C. So option C is correct. पुढचा क्वेश्चन पहा. If y is equal to x into sin inverse x, then dy by dx is equal to y is equal to x into sin inverse x. First term x into derivative of second term sin inverse x derivative, it is 1 upon root 1 minus x square प्लस सेकंड टर्म म्हणजे साइन इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म एक्सचं डेरिवेटिव्ह 1. सो दिस इज युअर आन्सर, एक्स अपॉन रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस साइन इनवर्स एक्स. इट इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Again the parallel question is there. If y is equal to x into tan inverse x, then dy by dx is equal to x into tan inverse x u into v. पहला x इंटू दूसरे का डेरिवेटिव tan इनवर्स x चं डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर असतं, प्लस दूसरा टर्म मतलब tan इनवर्स x इंटू पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1. सो दिस इज योर आंसर, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस tan इनवर्स x. इट इज इन ऑप्शन A. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to 1 plus x square into tan inverse x, then dy by dx is equal to, I think again it is looking like u into v. So dy by dx is equal to first term मतलब 1 plus x square into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म. मित्रांनो tan इनवर्स x चं डेरिव्हेटिव्ह, tan इनवर्स x चं डेरिव्हेटिव्ह असतं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, राइट. u मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वेअर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ओके, दिस इज u इंटू v डैश प्लस v मतलब दूसरा टर्म tan इनवर्स x इंटू पहले का डेरिवेटिव, पहल्या टर्मचं डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x. सो दिस इज 2x. ओके, नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर गेट कॅन्सल. सो द रिमेनिंग टर्म इज 1. हे दोन्ही कॅन्सल झाल्यानंतर 1 शिल्लक राहतं. 1 प्लस 2x इंटू tan इनवर्स x, 2x इंटू tan इनवर्स x. सो दिस इज युअर आन्सर, 1 प्लस 2x इंटू tan इनवर्स x. इट इज इन option B. So option B is correct. Next sum, if y is equal to x plus 1 into x plus 2, then dy by dx is equal to, this one is the last question of derivative of u into v. If y is equal to x plus 1 into x plus 2, then dy by dx is equal to, look here, dy by dx is equal to first term बोले तो x plus 1 into second term का डेरिवेटिव x प्लस 2 का डेरिवेटिव, उसमें x का डेरिवेटिव होता है 1 और 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, नहीं लिखा तो भी चलेगा. सो दिस इज x प्लस 1 इंटू 1, पहला टर्म इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म मतलब x प्लस 2 इंटू पहिल्याचं डेरिवेटिव x प्लस 1चं डेरिवेटिव, ज्यामध्ये xचं डेरिवेटिव असतं मित्रांनो 1 आणि या प्लस 1चं डेरिवेटिव काय होणार 0 बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टंट. वेल,
सो इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू वन म्हणजे एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इंटू वन म्हणजे एक्स प्लस टू. ओके, x plus x gives you 2x and plus 1 plus 2 becomes plus 3. So 2x plus 3 be your answer. 2x plus 3, it is in option C. So option C is correct. So in this way we can find the derivatives of u into v. Now let us move to the next bit. Derivatives of quotient means if there exists division between two terms, then how to find the derivatives. मित्रांनो, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ क्वोशंट याचा अर्थ जर यानुसार टर्म असतील तर y इज इक्वल टू यू बाय व्ही, न्यूमरेटर अपॉन डिनॉमिनेटर, अशा प्रकारे जर टर्म असेल तर डेरिव्हेटिव्हचं फॉर्म्युला यानुसार आहे. पहा, द डेरिव्हेटिव्ह इज गिवन बाय इन दिस वे, dy बाय dx इज इक्वल टू v इंटू du बाय dx मायनस u इंटू dv बाय dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. So the same formula can be given in this way also. If y is equal to numerator upon denominator, then y dash मतलब dy by dx is equal to dn dash minus nd dash upon d square. Look here, v म्हणजे denominator, du by dx म्हणजे वरच्याचं डेरिव्हेटिव्ह, n dash मायनस u म्हणजे न्यूमरेटर इंटू dv by dx म्हणजे खालच्याचं डेरिव्हेटिव्ह, डिनॉमिनेटरचं डेरिव्हेटिव्ह, इट इज d dash whole thing divided by v square म्हणजे denominatorचा square. You can remember this formula in this way also, dn dash minus nd dash upon d square. Now let us see the examples based on u by v. First question, if y is equal to log x upon x, then dy by dx is equal to. Recently we have seen that if y is equal to numerator upon denominator, then derivative is given by like this, dn dash minus nd dash upon d square. So you have to remember this formula for derivatives of numerator upon denominator. Now y is equal to, in this case, log x upon x is there, it is looking like numerator upon denominator. Let us find the derivative here. dy by dx is equal to, with the help of this formula, dn dash minus nd dash upon d square. d का मतलब है डिनोमिनेटर x इंटू एन डैश बोले तो न्यूमरेटरचं डेरिव्हेटिव्ह, वरच्याचं डेरिव्हेटिव्ह, लॉग एक्स का डेरिव्हेटिव्ह, इट इज 1 अपॉन एक्स माइनस माइनस एन बोले तो न्यूमरेटर, इट इज लॉग एक्स इंटू डी डॅश का मतलब है डिनॉमिनेटर का डेरिव्हेटिव्ह, एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह किती असतं 1, होल थिंग डिवाइडेड बाय डी स्क्वेअर मतलब डिनॉमिनेटर का स्क्वेअर, इट इज एक्स स्क्वेअर. So finally the answer comes like this, x and x get cancelled, it is 1 minus log x into 1 means log x divided by x square be your answer. 1 minus log x divided by x square, 1 minus log x divided by x square, it is in option B. So option B is correct. Next question, if y is equal to root x plus 1 divided by root x minus 1, then dy by dx is equal to, dy by dx is equal to, फॉर्म्युला कसा आहे, dn डॅश मायनस nd डॅश अपॉन d स्क्वेअर, यानुसार आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे. सो लेट अस ट्राय दिस वन. इट इज इक्वल टू, d का मतलब डिनोमिनेटर, इट इज रूट एक्स माइनस वन इंटू n डैश मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, उसमें 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सो दिस कंप्लीट्स dn डैश माइनस माइनस n मतलब कितना, न्यूमरेटर रूट एक्स प्लस 1, वी राइट हियर रूट एक्स प्लस 1 इंटू d डैश मतलब कितना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, उसमें माइनस 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव इट इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ओके, सो दिस इज dn डैश माइनस nd डैश, होल थिंग डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इट इज रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर. वेल नाउ लुक एट द न्यूमरेटर केयरफुली, वी कैन टेक 1 अपॉन 2 रूट एक्स. लुक हियर 1 अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन, 1 अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन घेतल्यानंतर 1 अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन घेतल्यानंतर ब्रॅकेटमध्ये काय शिल्लक राहतं, रूट एक्स माइनस 1, इट इज रूट एक्स माइनस 1, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस, रूट एक्स प्लस 1 एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय दिस इज रूट एक्स माइनस 1 ब्रॅकेट का स्क्वायर. मित्रांनो, या दोन टर्म मधून वी हॅव टेकन 1 अपॉन 2 रूट एक्स एज अ कॉमन.
Now let us simplify this one. It is equal to 1 upon 2 root x inside the bracket, minus 1 and minus 1 becomes minus 2. Root x minus root x get cancelled. Let us open these two brackets here. It is root x minus 1 minus आतमध्ये घेऊन चला, minus multiply inside the bracket, it comes minus root x and minus 1, well, divided by root x minus 1 bracket square. Okay, further root x and minus root x get cancelled. Minus 1 becomes minus 2. It is equal to 1 upon 2 root x inside the bracket, minus 1 becomes minus 2 divided by root x minus 1 bracket square. Once again this 2 and divided by 2 get cancelled. In this way the final answer will be minus 1 divided by negative matlab negative 1 divided by root x into bracket root x minus 1 bracket square. So this is your answer. Look here, minus 1 divided by root x into root x minus 1 bracket square. It is in option A. So option A is correct. Now the next question, if y is equal to e raised to x plus 1 divided by e raised to x minus 1, then dy by dx is equal to बोलिए d मतलब डिनोमिनेटर, इट इज e raised to x minus 1 into n dash मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, हे झालं dn dash मायनस n मतलब न्यूमरेटर, इट इज e raised to x plus 1 into d dash म्हणजे काय झालं, d dash मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, माइनस 1 का 0, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x डिवाइडेड बाय d स्क्वायर बोले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, e raised to x minus 1 ब्रैकेट का स्क्वायर. नाउ इट इज इक्वल टू, लेट अस टेक कॉमन दिस e raised to x फ्रॉम दीज टू टर्म्स. या न्यूमरेटर मधून e raised to x कॉमन काढू, e raised to x कॉमन, देन इनसाइड द ब्रैकेट द रिमेनिंग टर्म्स आर लाइक दिस, e raised to x minus 1, e raised to x minus 1, बीच में माइनस है तो बीच में माइनस, e raised to x plus 1, e raised to x plus 1 and whole thing divided by the denominator e raised to x minus 1 bracket square. Now it is equal to e raised to x inside the bracket. If we open this bracket, then look here, e raised to x minus e raised to x get cancelled, e raised to x minus e raised to x cancel होता, minus 1, look here, minus 1 becomes minus 2 and divided by e raised to x minus 1 bracket square. So this is your answer. It is minus 2 e raised to x divided by e raised to x minus 1 bracket square, minus 2 e raised to x divided by e raised to x minus 1 bracket square. It is in option B. So option B is correct. Let us move to the next sum. If y is equal to sin x upon 1 plus cos x, then dy by dx is equal to dn dash minus nd dash upon d square. d मतलब 1 plus cos x डिनोमिनेटर इंटू n dash dn dash, d मतलब डिनोमिनेटर, n मतलब न्यूमरेटर, d dash मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, n dash मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव. सो वी राइट द आंसर एज dn dash माइनस nd dash अपॉन d स्क्वेअर. बोला d म्हणजे 1 plus cos x इंटू n dash म्हणजे न्यूमरेटरचं डेरिवेटिव, साइन एक्सचं डेरिवेटिव असतं cos x, माइनस n बोले तो न्यूमरेटर इट इज साइन एक्स इंटू d डैश मीन्स डिनोमिनेटरचं डेरिवेटिव, 1 चा 0 होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स. ओके, सो होल थिंग डिवाइडेड बाय d स्क्वायर म्हणजे डिनोमिनेटरचं स्क्वायर, इट इज 1 plus cos x ब्रैकेट का स्क्वायर. राइट, नाउ let us multiply this cos x inside the bracket here. It is equal to cos x into 1 means what? Cos x into 1 means cos x. Further, cos x into cos x becomes cos square x. Further, minus sin x into minus sin x, minus minus becomes plus, sin x into sin x मतलब sin square x divided by 1 plus cos x bracket square. Okay, now we know that the trigonometric relation cos square x plus sin square x is equal to how much? 1. आपल्याला माहित आहे cos square theta plus sin square theta 1 असतं. So numerator comes cos x plus 1 and in the denominator it is 1 plus cos x bracket square. Okay, we can cancel a bracket from numerator and denominator.
So finally the answer becomes 1 upon 1 plus cos x. So this is your answer, 1 upon 1 plus cos x. It is in option D, 1 upon 1 plus cos x. Option D is correct. पुढचा क्वेश्चन पहा, अगला सवाल देखिए, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन देन dy बाय dx इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन dn डैश माइनस nd डैश अपॉन d स्क्वेअर. d बोले तो डिनॉमिनेटर x माइनस वन, d n डॅश म्हणजे न्यूमरेटरचं डेरिव्हेटिव्ह, x चं डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि या 1 चं डेरिव्हेटिव्ह 0. सो दिस इज n डॅश मीन्स 1 dn डॅश माइनस n मतलब न्यूमरेटर, it is x plus 1 into d dash means denominator's derivative, x minus 1 चा derivative येतं 1 minus 1 चा 0, x चा derivative 1. this is dn dash minus nd dash upon d square means denominator का square, x minus 1 bracket का square. well now let us open this bracket here, bracket open करो, x minus 1 into 1 मतलब x minus 1 and this is minus x minus 1 minus x minus 1 divided by x minus 1 bracket square. Again x and minus x get cancel, minus 1 becomes minus 2. So the answer becomes minus 2 divided by x minus 1 bracket square. This is your answer, minus 2 upon x minus 1 bracket square. It is in option C. So option C is correct. Next one, if y is equal to e raised to x upon x then dy by dx is equal to, once again we apply numerator upon denominator wala formula here, dy by dx is equal to dn dash minus nd dash upon d square. d म्हणजे denominator x into n dash means numerator चं derivative, e raised to x चं derivative e raised to x minus हे झालं dn dash minus nd dash, n मतलब numerator e raised to x into d dash म्हणजे denominator चं derivative, x चं derivative it is 1 whole thing divided by d square म्हणजे x square, dn dash minus nd dash upon d square नुसार हे आन्सर लिहिलेला आहे. now if we take e raised to x common inside the bracket, काय remains, x minus 1 remains, okay, whole thing divided by x square. so this is your final answer, e raised to x into bracket x minus 1 divided by x square. It is in option A. So option A is correct. Number 67, if y is equal to sin x upon x then dy by dx is equal to, look here, dy by dx is equal to dn dash minus nd dash upon d square d x into n dash sin x the derivative cos x minus n numerator sin x into d dash x the derivative 1 divided by d square divided by x square. So this is your answer, x into cos x minus sin x upon x square, x into cos x minus sin x upon x square. It is in option B. So option B is correct. Parallel question is there, if y is equal to sin x upon e raised to x then dy by dx is equal to, we solve this one, dy by dx is equal to dn dash minus n dash upon d square. d बोले तो डिनोमिनेटर e raised to x into n dash मतलब न्यूमरेटर चा डेरिवेटिव sin x चा डेरिवेटिव cos x minus n बोले तो न्यूमरेटर sin x into d dash मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x upon d square मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर e raised to x का स्क्वायर. well so from numerator we take e raised to x common, it is equal to e raised to x common, then inside the bracket the remaining term is cos x minus sin x, okay, so whole thing divided by e raised to x bracket ka square. now we can cancel a single e raised to x from numerator and denominator, so final answer will be cos x minus sin x whole thing divided by e raised to x. So this is your answer, cos x minus sin x upon e raised to x, cos x minus sin x upon e raised to x. It is in option C. So option C is correct. Next question, if y is equal to x upon x plus 1 then dy by dx is equal to, again numerator upon denominator वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, dy by dx is equal to d x plus 1 into n dash x का डेरिवेटिव 1 माइनस n बोले तो न्यूमरेटर x इंटू d डैश मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 से 0 x चा डेरिवेटिव 1 असतं dn डैश माइनस n d डैश अपॉन d स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर
x plus 1 square, right? Now this x and minus x get cancelled. At the numerator the remaining term is only 1. मित्रांनो x आणि minus x कॅन्सल होतं, हे 1 शिल्लक राहतं. 1 अपॉन x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर असं तुमचं उत्तर येतं. 1 अपॉन x प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. It is in option A. So option A is correct. So friends, in this way we can solve the derivatives of u into v and u by v. In the next lecture we will see the derivatives based on trigonometric and inverse trigonometric functions. Thank you.